f is of bounded variations. ठीक हो गया जी? फंक्शन हमें क्या गिवन है? फंक्शन हमें continuous है on the interval ab and f dash is bounded on the open interval ab, and we have to prove that f is of bounded variations. अच्छा, let P be the partition of AB such that P is equal to x naught, x1 to xn. So let Ti be any point in the open interval xi minus 1 to xi. Then xi minus 1 is equal to xi minus xi minus 1. ये मैंने टर्म कैसे, ये इक्वेशन कैसे लिखी? हाउ? जी, ये टर्म कैसे लिखी, ये क्वेश्चन कैसे लिखी मैंने? जी बताएं। बताएं जी, ये मैंने कैसे लिखी? f of xi minus f of xi minus 1 is equal to xi minus xi minus 1 into f dash of ti. जी बोलें। Sir, by mean value theorem. जी, it is by mean value theorem. It is by mean value theorem. Since function is continuous and differentiable, so we can use mean value theorem. मॉड लगा लें both sides पर। This is equal to f dash of ti. ठीक हो गया जी? अब this implies is equal to ti. ठीक हो गया जी? ये बताइए मैंने मॉड कैसे हटा दिया? ये मॉड कैसे रिमूव हुआ? सर ये लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जी बिल्कुल, as xi minus 1 is less than xi, that will be positive. So इस वजह से हमने ये रिमूव कर लिया। अब आप इस तरह का एक समेशन ले लें both sides. I is equal to 1 to n one, which is equal to one to n
या बात चेक कितना पास रहने दो की करनी और भाई वैसे साहब अपने म्यूट करें। ठीक हो गया जी, ये आपके पास होगी क्वेश्चन नंबर 1। Since it is given that f dash is bounded, so there exists a real number capital M such that f dash of ti for all I. ठीक हो गया? So this implies less or equal to M। M को समेशन से बाहर निकाल लें। अब समेशन ओपन करें, we have अब इन बिटवीन जितनी भी टर्म्स होंगी वो आपस में कट जाएंगी, सिर्फ एंड पॉइंट से आ जाएंगे। So this implies we have हमारे पास रह जाएगा m x n minus x naught which is equal to m b minus a। ठीक हो गया? This is a finite quantity। सुप्रीमम ले लें both sides, यहाँ पर भी सुप्रीमम ले और यहाँ पर भी सुप्रीमम ले। इसका सुप्रीमम क्या होगा? वो भी यही होगा। Now this is the total definition of total variation of f। This is equal to a finite quantity। If the total variation of a function f is a finite quantity, then we say that it is of bounded variations। ठीक हो गया? This completes the proof। जी, हमारे पास थ्योरम था कि let f be a continuous function on the interval ab and f dash is bounded on the open interval ab, and we have to prove that f is of bounded variations। ठीक हो गया? Let p be the partition of ab such that p is equal to x naught x1 to xn, and let ti belongs to the open interval xi minus 1 to xi। Then since it is given that function is continuous and differentiable, so we can use mean value theorem। So by mean value theorem, f of xi minus f of xi minus 1 is equal to xi minus 1 f dash of ti। ये mean value theorem से हमने लिखी है। So mod ले लें both sides, we have mod of f of xi minus f of xi minus 1 which is equal to mod of xi minus 1 mod of f dash of ti। ठीक हो गया? Since xi minus 1 is less than xi, so हम mod को रिमूव कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा xi minus 1। ठीक हो गया? अब आप समेशन ले लें both sides, हमारे पास आ जाएगा समेशन I is equal to 1 to n absolute of f of xi minus f of xi minus 1 which is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus 1 absolute of f dash of ti। Since it is given that f dash is bounded, ठीक हो गई? हमें given है कि f dash is bounded on the open interval ab, so therefore there exists a real number capital M such that absolute of f dash of ti is less or equal to m for all I। ठीक हो गया? So from 1 में हम capital M को पुट कर देते हैं, हमारे पास यहाँ less or equal to आ जाएगा
m को अगर हम बाहर निकालें समेशन से, देन समेशन अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा xn माइनस x नॉट। xn होता है हमारे पास b, x नॉट होता है हमारे पास a। अब दोनों तरफ सुप्रीमम ले लें तो we have supremum summation I is equal to 1 to n absolute f of xi minus f of xi minus 1, which is less or equal to supremum m into b minus a। ठीक होगा, इसका सुप्रीमम भी m into b minus a होगा। So this shows that the total variation of the function f is a finite quantity, that is m into b minus a. From definition, if the total variation of the function f is finite, and this shows that it is function is of bounded variations। जी नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि let f and g be two functions of bounded variations, then their sums, differences and products are also functions of bounded variations। ठीक होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास फंक्शंस हैं f और g, वो बाउंडेड वेरिएशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशंस का मतलब इनकी टोटल वेरिएशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। और ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इफ ए फंक्शन f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस देन दिस इंप्लाइज दैट इट इज बाउंडेड। ठीक हो, सो प्लस हमने ये भी शो करना है कि टोटल वेरिएशन ऑफ f plus minus g is less or equal to total variation of f plus total variation of g, और यहाँ पर total variation of fg is less or equal to m2 into total variation of f plus m plus m1 into total variation of g। ये भी हमने साथ शो करना है। जी, let p be the partition of ab and plus हमें ये भी given है कि f and g are functions of bounded variations, that means that their total variation a to b f and total variation a to b g is finite, तभी वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस होंगे ना। सो पहला हम प्लस वाला पार्ट करते हैं, v a to b f plus g, that will be equal to supremum summation I is equal to 1 to n del f plus g I, so that will be equal to supremum summation I is equal to 1 to n del fi plus del gi, so that will be less or equal to supremum I is equal to 1 to n del fi plus del gi। ठीक हो गया, ये हमने
एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ट्रायंगल इक्वालिटी लगा दी. So that will be equal to supremum summation I is equal to 1 to n del fi plus supremum summation I is equal to 1 to n del gi. एब्सोल्यूट ही होगा. ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये वाली और ये वाली किस चीज की डेफिनेशन बताएं जी. सर वेरिएशन की. वेरिएशन की जी वेरिएशन की हाँ जी, टोटल वेरिएशन ऑफ f वेरिएशन की plus total variation of g, that is f plus of g. और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि टोटल वेरिएशन ऑफ f plus g is less or equal to total variation of f plus total variation of g. साथ हमें ये भी शो करना था कि टोटल वेरिएशन ऑफ f plus g is मतलब f plus g is also of bounded variation. If f is bounded variation and g is of bounded variation, then f plus g is also a bounded variation. क्या यहाँ से ये साबित हो रहा है हमारा रिजल्ट? क्या इस चीज से ये साबित हो रहा है? बताएं जी. क्या ये साबित हो रहा है कि f plus g is of bounded variations? जी anyone? जी बताएं. यार सामने जवाब लिखा हुआ है, कुछ तो बोलो. यस सर हो रहा है प्रूफ. कैसे? ये डेफिनेशन भी आ गई और अगर दोनों का फंक्शन का सम मतलब फाइनाइट है बाउंडेड है तो वो खुद भी तो उनका जो सेपरेट सम होगा वो भी तो बाउंडेड होगा. कैसे हो रहा है? देखें, हमें ये गिवन था कि f and g both are functions of bounded variations. ठीक हो गया. It means that the total variation of f and the total variation of g is finite. तभी वो function of bounded variations होगा. ठीक हो गया. अब ये है डेफिनेशन टोटल वेरिएशन ऑफ f की और ये है टोटल वेरिएशन ऑफ g की. अब टोटल वेरिएशन ऑफ f भी हमें पता है फाइनाइट है बिकॉज f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, और हमें ये भी पता है कि टोटल वेरिएशन ऑफ g इज आल्सो फाइनाइट बिकॉज g इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस. ठीक हो गया. इसका मतलब फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज फाइनाइट. So this implies that a total variation of f plus g is less or equal to a finite quantity. This implies that the total variation of f plus g is less or equal to finite. This shows f plus g is also of bounded variations. ठीक हो गया. मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि अगर टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f is finite, then it is said to be of bounded variations. नेक्स्ट पार्ट जो है वो जरा आप मुझे करके दिखाएं. वी ए टू बी एफ माइनस जी इज लेस और इक्वल टू वी ए टू बी एफ प्लस वी ए टू बी जी. ये जरा मुझे प्रूफ करके दिखाएं.
सर हो गया। लो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हो गया। अच्छा जी, हमारे पास देखें VA to B F minus G is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n del F minus G I. So that is equal to supremum summation I is equal to 1 to n del Fi minus del Gi. So that will be less or equal to, again using the property of absolute, we have del Fi plus del Gi. ठीक हो गया जी। Now we know that supremum of F plus G is less or equal to supremum of F plus supremum of G. So which is less or equal to supremum of summation I is equal to 1 to n del Fi plus supremum of summation I is equal to 1 to n del Gi. ठीक हो गया? That is equal to the total variation of F plus total variation of G. Now, since it is given that total variation of F and total variation of G both are finite, because both are bounded variations, so the total variation of F minus G is less or equal to a finite quantity. This shows that F minus G is also of bounded variations. Next है जी हमारे पास let H is equal to FG. Product वाला केस हम कर रहे हैं. Suppose H is equal to FG, and the total variation of H will be equal to supremum summation I is equal to 1 to n del Hi. ठीक हो गया? Now del Hi is equal to H of Xi minus H of Xi minus 1. अब H हमारे पास किसके बराबर है? Fg के. That will be equal to minus minus 1. ठीक हो गया? So add and subtract करें term f of xi g of xi minus 1. हमारे पास होगा f of xi g of xi minus f of xi g of xi minus 1 plus f of xi g of xi minus 1 minus f of xi minus 1 g of xi minus 1. ये दो टर्म हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर. ठीक हो गया? अब
अब आप देखें तो इसमें से एफ ऑफ एक्स आई कॉमन आता है और यहाँ से जी ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमन, इनको कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा डेल एच आई, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। कॉमन लिया हमने एफ ऑफ एक्स आई, जी एक्स आई माइनस वन, ये आ गया, प्लस दूसरी टर्म में से जी ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमन ले लिया तो आ गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस माइनस वन, ये कॉमन, ठीक हो गया। और दिस इज इक्वल टू, ये बन गया डेल जी आई और ये बन गया डेल एफ आई, ठीक हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं टोटल वेरिएशन ऑफ एच जो था, दैट इज सुप्रीमम समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, डेल एच आई था, डेल एच आई की वैल्यू ये पुट कर दें, प्लस एफ आई, ये चीज है, ठीक हो गया। नाउ सिंस बोथ एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, ये हमें गिवन है और हम ये जानते हैं कि if f and g are both functions of bounded variation then f and g are bounded. So suppose that f is bounded by m1 and f2 g is bounded by m2, so that is will be, इस पर पहले सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएं, that will be less or equal to supremum 1 to n del gi plus del fi, ये हो गया जी, that will be equal to del gi del fi, ठीक है जी। Now since f is bounded by m1, अभी हमने कहा था that will be less or equal to supremum of summation f is bounded by m1 and g is bounded by m2, ठीक हो गया। So we know that supremum of f plus g is less or equal to supremum of f plus g, supremum of f plus supremum of g, so that will be less or equal to m1 by निकाल लें, supremum summation I is equal to 1 to n del gi plus m2 supremum summation I is equal to 1 del fi, ठीक हो गया। So that will be equal to, ये क्या चीज बनती है, m2 total variation of f plus m1 total variation of g. Since f and g are both functions of bounded variation, this means that these quantities are finite. So this implies that whole quantity is finite. So the total variation of fg is less or equal to a finite quantity. This means that total variation of fg is, this means that fg is function of bounded variations. This completes the proof. बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, सर स्लाइड चला दें। वो मैं नेक्स्ट में चला देता हूँ। ओके सर, थैंक यू।